Good morning, friends. Today, in this lecture, we start the chapter number 1. The name of this chapter is Advanced Windowing Toolkit. Just wait. Abstract Windowing Toolkit. So, in previous lecture, हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू द एप्लेट प्रोग्रामिंग देखा था. In second lecture, we familiar with this font class and then color class. Then in third lecture, we seen about the what is the graphics programming. Then we very well familiar with this the applet programming also by taking the demonstration of the practical. So before we start our the syllabus, you know that why this AWT is beneficial or important for you. Then you know that you design the web page or website. So what you can having the many components just like the buttons, text field, text area, or you are also the familiar with the screen means what all the components that is available with the screen, those you can be a look like a attractive manner means it is the easier to understand for the user. So what in Java they can be developed the package. This name of the package is the AWT. AWT means it is the package. So in this package they are having the many component, many classes like the component, container, window, frame and panel. So we discuss about the AWT classes and Windows fundamental. So main objective of this chapter is to design and develop the graphical user interface programs by using the AWT. So main इंटेंशन या मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा इस चैप्टर का है जो है उसमें हमको बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ाई करने की है और वो सब ऑब्जेक्ट या वो सब कंपोनेंट आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू यूज करके उसका प्रैक्टिस करना है. सो वी स्टार्ट आवर द सेशन. First of all, what is the AWT? Already all of you know or listen this word many times from me, but actually we do not start the what is the AWT. AWT is the collections of the classes and interfaces. Also we say that AWT is the contains the large number of classes and methods that to create and manage graphical user interface. We say that the another word GUI, graphical user interface. So the major advantage of the AWT is the applet. So all of you knowing that applet is interact with the user through AWT.
not through the console based IO classes. अभी कैसा है, हमको एक ऑब्जेक्ट तैयार करनी है, वो ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक वी से दैट द बटन्स. So user is directly interact with this a button, not AWT. मीन्स AWT के जो क्लासेस है उसके थ्रू यूजर हमको इंटरैक्ट करना है. सो we say that it is the graphical user interface. So AWT is also support the window based graphical interface. So you know that if you create the AWT programming, first of all you also knowing that what is the exactly AWT. AWT means abstract window toolkit. So abstract window toolkit, इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस फॉर जावा प्रोग्राम. यहाँ पे एक जो वर्ड है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API. व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API? The platform dependent API means, first of all, a programmer can be create the object by using the AWT. Then what? User can direct interact with this AWT. Means which one is the mediator? Is the AWT. But AWT is operated by which one? It is the operating system. So most of the times number of the operating system, you know that, just like the Windows, Linux, Mac OS, these are the different operating system. So you can create the component just like the text box, buttons, then it operate by which one? It is the operating system when you open their screen. So AWT is platform dependent. मीन्स यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा और बोल सकते हैं. जैसे कि हमने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया है. अब ये बटन का ऑब्जेक्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग दिखेगा और यही बटन का ऑब्जेक्ट हमने मैक OS में बनाया तो वहां पे स्क्रीन पे अलग दिखेगा. मीन्स व्हाट? इट इज द, वी से दैट इट इज द लुक एंड फील. लुक एंड फील जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मिलता है या जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कमांड देता है, अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी ऑपरेटेड. सो AWT is a look control. It is the different look and feel. It is the different look and feel according to the operating system. So all of you getting this correct? Platform dependent, जैसा उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा वैसा वो ऑब्जेक्ट या वो कंपोनेंट can be operated by the operating system. So हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने बोला है कि जावा AWT contains the number of the classes and methods. अब जो AWT के क्लासेस है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे जो कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं आपके लिए या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू दिस. द नेक्स्ट इज द AWT is rarely used nowadays because of its platform dependent and heavyweight nature. अब यहाँ पे मैंने और एक वर्ड लिखा है हेवी वेट. अब ये हेवी वेट क्या है?
heavyweight means what? The operating system is asked directly by the component and then they can be operated. So it is the heavy weight means, मैंने पहले आपको बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी मैनेज द आवर कंपोनेंट. सो दिस AWT इज द हेवी वेट नेचर. जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको वह डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा. क्यों? कि उसको पहले we study this AWT in very well. So main point is AWT is the collections of the number of the classes and methods. It is used for the GUI application. Then second, it is the platform independent, and third, it is the heavyweight. So we turn to the next slide. So this is the AWT hierarchy. Hierarchy means there are the number of the classes is available. First is the java.language.object. हम जो भी कंपोनेंट बनाते हैं, that all component is related with this the object class, and this object class is available in which package? That is the java.language. Then component class is available in which package? That is the java.awt. And the container package is available in java.awt. Then again we use the panel is class available in java.awt, and then applet is the class is available in the java.applet package. Means here how many package we used? First one is the java.language, second java.awt, third java.applet. For applet purpose we use the java.applet package. For component, container and panel we use the java.awt package, and for object we use the java.language package. So this AWT class hierarchy, most of the times student are not familiar with this. If they ask where is the object class is available in which package, there is the MCQ questions. Then also they can be asked the component class is available in which package, and the options are java.language, java.awt, java.applet. They become confused. So what you understand this, the object class is available in java.language, component, container and panel available in java.awt, and applet is available in the java.applet. So we turn to next. Here is hierarchy. Java hierarchy, Java AWT hierarchy, AWT classes hierarchy. So you understand what are the classes available in this AWT package, that AWT class hierarchy. AWT is the collections of the classes and methods for the programming purpose. Already we studied about this.
The component class, container class, window class, panel class, and frame class. These are the main component. These are the main part. Component, container, window, frame, and panel. The component, what is the component? What is the container? What is the window, frame, panel? Next point. The window is also divided into the dialog class. Panel is the subclass of the container and applet is the subclass of the panel. So here is what you understand which is the superclass and which is the subclass. Why? If you don't understand this, then you don't override the method that is available with the superclass and subclass. So superclass is component for all the classes. Container is the superclass of the window and panel. Frame is the subclass of the window and applet is the subclass of the panel. So I think you understand this figure. This figure is important for you for future part. If you familiar with this figure, I once again explain here button, label, checkbox, choice and scroll bar. These are the different classes available under the component class. You know that you know button, just like the start button. Label means it is the only information of the text. Checkbox, you just check this. Choice, you select only one option out of the many options. Scroll bar, horizontal scroll bar, vertical scroll bar, means these are the different components that is available in the component class, and component class is the super class of that the all the components. So we turn to the next one by one. Next we see the component means what, container means what, window means what, frame means what, and panel means what. So component. So component, all the elements like button, text field, scroll bar are known as the component. Component is the area that user is interact with them. Means user जो है हमारा, उसको AWT क्लासेस मालूम नहीं, उसको ऑब्जेक्ट मालूम नहीं, उसको क्या मालूम है, सिर्फ स्क्रीन और स्क्रीन के जो फ्रंट साइड हमको जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे कि इफ यू वांट टू स्टार्ट और क्लोज द कंप्यूटर, देन व्हाट, एवरी यूजर इज नो द स्टार्ट बटन, then it goes to the shutdown and then close. In this way the user is familiar with this screen. So all the components, if you want to be a paste in a screen at a particular position, so we always use the component. First we create the component, then what, you can be add all the components into a container. कंपोनेंट के बारे में हम और थोड़ा सा दिखेंगे, ज़्यादा बोलेंगे. कंपोनेंट क्लास क्या है? कंपोनेंट क्लास इज द टॉप ऑफ द AWT hierarchy. It is an abstract class that encapsulate all the
attributes of the visual component. Component object is the responsible for remembering the current foreground and background color of the color and currently selected text font. अब इसमें क्या है कि हमारा कंपोनेंट को बैकग्राउंड कलर कुछ देने का है, या सामने का कलर कुछ देने का है, या करंट जो टेक्स्ट है उसके लिए कुछ करंट हमको कुछ फॉर्मेटिंग करने की है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपोनेंट क्लास, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट. सो you can be formatting on the object, that is the useful by using this component class. So you knowing that what is the component class? Component class is contains the more than the 100 public methods that manage the events such as the mouse, keyboard, or positioning and sizing the window, repainting. This component class is a very well advantage. So I think you know that what is the component. Then we turn to the container. कंटेनर क्या है? जैसे कि हमने फिगर में अभी देखा था कि कंटेनर क्या है. ये जो कंटेनर है वहाँ पे हमने कंपोनेंट उसका सुपर क्लास है और उसका सब क्लास कौन सा है? विंडो और पैनल है. विंडो मीन्स व्हाट? यू नो दैट विंडोज मीन्स द एप्लीकेशन दैट कंटेन्स द मेन प्रोग्राम, जस्ट लाइक द पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. और पैनल में क्या है कि द एप्लीकेशंस और दैट प्रोग्राम इज डज नॉट कंटेन द मेन मेथड इज ऑलवेज यूज द जावा प्लगइन्स. हमने प्रीवियस ये देखा था. तो जस्ट लाइक द कंटेनर इज लाइक अ स्क्रीन वेयर इन प्लेसिंग द कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, checkbox. In short, container contain the controls of the layout of the component. कंटेनर और कंपोनेंट ये जो है, अब कैसा है कि विंडो हमारा जो है, विंडो बड़ी स्क्रीन और उसमें कंटेनर क्या है? छोटे छोटी स्क्रीन हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम छोटा कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, छोटा कंपोनेंट वन बाय वन ऐड कर रहे हैं. तो उसके लिए लेआउट मैनेजर या ऑल दिस थिंग्स, जो भी लेआउट डिसाइड करने का काम किसका है? कंटेनर क्लास का है. सो कंटेनर क्लास इज द इम्पोर्टेंट. सो कंटेनर क्लास ये जो है हमारा अनदर सब क्लास है कंपोनेंट का, और इसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं. तो it is the basic one about this component. So we turn to the next one. अब कंटेनर के जो टाइप्स है उसमें विंडो, डायलॉग और फ्रेम और पैनल. अब यहाँ पे विंडो के जो डायलॉग है, पहला जो है विंडो. Window, it is the top level of the window and it can be instance a window class, but window is no border and no title. Dialog में क्या है? Dialog are the subclass of the window और dialog में border और title होते हैं. तो वही एक मेन डिफरेंस है. विंडो में border और टाइटल नहीं है और डायलॉग में बॉर्डर और टाइटल है. थोड़ा सा हम इसमें और देखेंगे. फ्रेम. अब फ्रेम क्या है? फ्रेम इज द सब क्लास ऑफ द विंडो हैज रिसाइजिंग कैनवास. कैनवास क्या है? इट इज द ब्लैंक विंडो और इसमें हम सेवरल कंपोनेंट भी पेस्ट कर सकते हैं एज यूजुअल. एप्लेट. एप्लेट फ्रेम में क्या है? फ्रेम हैज अ टाइटल, बॉर्डर एंड मेनू बार्स. इट कंटेन्स द all the components
that is used for the programming purpose. फ्रेम के बारे में और पैनल के बारे में हम प्रोग्रामिंग थ्रू देखेंगे. अब पैनल क्लास क्या है? What is the panel class? Panel class is the concrete subclass of the container. और इसमें हम देर इज नो टाइटल बार, नो मेनू बार और नो बॉर्डर. तो यहाँ पे हम सब कंपोनेंट होल्ड कर सकते हैं और हम यहाँ ऑल an instance of the panel class provides a container to which to add the component. So we summarize this figure. In this figure, object, component, window, panel, frame, dialog and applet. These are the components. So this figure is very important for you, because why? You understand in object class is where is available, it is the java.lang. Component class is where is available in the java.awt. If you get the one of the example, it is the button. Suppose button is the class, then where is available, it is the java.awt.component.button. So in as same this a container, suppose you use the applet class, applet, then object, component, container, panel and applet. It is the hierarchy. If you understand this hierarchy, then it is the very easier to understand that those method is available in the superclass that easily useful for you in the subclass of the subclass also. So for programming point of view, this figure is very important for you. So I think all of you understand this AWT hierarchy, and in next lecture you become the familiar with this by doing the programming of the frame. So हम frame के बारे में next lecture में पढ़ेंगे. और so today we stop here and